we have to invest. And last one, that was the taxation of mutual fund. So last time we have discussed about how we have to choose. So that topic is already completed. Today we will discuss about the mutual fund taxation. So what we do within the 5 minutes, we will recap of last session. So you will be aware of what's going on. Yeah. So that once you have to make the mutual fund investment, you have to think whether it is a tax saving or not. What you have the free fund? Suppose that I have the free fund. I have the total fund of the 10 lakh rupees, but I have some make investment, or I have to do some higher education expenditure of the 7 lakh or 10 lakh, 8 lakh rupees. Then it is, I have only 2 lakh rupees free fund. So I can make investment only of the 2 lakh rupees, not total 10 lakh rupees. So that you have to understand. Whenever you have to make any mutual fund, you have to see what is the performance of the last 5 years, because sometime in the 1 year, some mutual fund can show the 40% profit, 30% profit. But when you see the last 5 years or 3 years, then you can see what is the average performance. So before making or before choosing any mutual fund, you have to check your 5-year performance. And today in the WhatsApp group, I have shared one PDF format where I have written some at least you can say the top 20 mutual fund that is in the ELS, equity इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में मैंने डाला था, दैट इज द टैक्स सेविंग स्कीम, जहां पर टॉप 20 म्यूचुअल फंड का आई हैव गिवन द 5 years का परफॉर्मेंस, which mutual fund is giving the more ROI or return to you. Then you can find out in WhatsApp group and confirm with the other mutual fund. Whatever the you are thinking कि मुझे A, B, C में जाना है, तो you have to compare with the other mutual fund की what is the scenario. Suppose mutual fund A is giving the 10% ROI, then other mutual fund they are giving 10%, 8%, 12%, 15%. So once you compare your mutual fund with existing or where you want to invest or with other, then you will be the aware of what's going on in market. जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो आपको म्यूचुअल फंड के साइट पर चला जाता है. सपोज दैट यू हैव चूजन ए म्यूचुअल फंड, तो ए म्यूचुअल फंड के साइट पर इफ यू गो, दे हैव रिटन द होल डॉक्यूमेंट कि दिस स्कीम विल बी इन्वेस्टेड इन कंपनी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो यू विल गेट होल इंफॉर्मेशन. अब फिर देन यू हैव टू ट्रैक आउट द कंपनी का रिकॉर्ड, व्हाट इज द कंपनी रिकॉर्ड एक्सेट्रा. दैट देन what is the total fund mutual fund house is having, like 10 crore, 1000 crore, 2000 crore, 5000 crore, 1 lakh crore, and what is the expense allocation for your fund, whether it is the 0.5%, whether it is the 0.25%, whether it is the 1%. So जितना ज्यादा ये expense का allocation होगा, that will your fund will be reduced, and जितना कम होगा, that will be the good for you. तो ये हो गया. Now today we will discuss about the tax on the capital gain. Once you have invested into mutual fund or equity, then definitely you have to think you have to pay some taxes. Suppose that today I have purchased mutual fund or equity share, and within the 1 year, within 2 years, within 3 years, within 4 years, within 5 years, whenever I will sell this mutual fund or equity, then it will be the taxed. अब ये टैक्स किस रेट पर लगेगा, that we have to understand. Suppose that किसी भी शेयर पर और म्यूचुअल फंड पर we are saying कि we are going to earn 50% profit or 100% profit, then whether taxation will be 10%, whether taxation will be 20%, or whether taxation will be 30%. So anyone from participate, suppose that you have made any investment till date, so may I know what is the tax rate on your investment till date, whatever you have made the investment in mutual fund, equity, or equity and mutual fund. Okay, so what is the tax rate? Do you have any idea? Neelam ji, Basant ji, or Alisha Samana ji, any idea? No. Yeah. Chalo, let us discuss. तो सबसे पहले we have to understand कि whenever we make any investment, Basant ji is writing zero मतलब कि you have मतलब no idea, or you are Basant ji want to say it is the 0%. If you are saying it is the 0%, then it is not a correct. You have to pay some taxes. Okay, then let us see क्या Basant ji?
I get refund while filing. So that's another part. So suppose that you don't have the so much income, so you can get the refund. That's another part. But there is some taxation. Okay, sir. Suppose that I'm working as a salary, so my salary income will be taxed as per the slab rate. Until 5 lakh rupees, there is no taxation. Then I cannot say that salary is exempted. Yeah, as per slab rate, or my total income is not exceeding that exemption limit. That's why I'm not going to pay anything. But my salary is the taxable. That I want to say. So again, whatever we have the capital gain on the share, mutual fund, or any listed security, that is the taxable. It is a different part whether due to the some other you don't have any other income. Suppose that you have the income of the 10 lakh rupees, or you are also having the share capital gain on the share, equity, mutual fund. Definitely you have to pay tax. So that we are going to discuss. So we have to pay tax on shares, mutual fund, and debt fund. So when you make any investment in financial instrument, then there is the three kind of the investment. Like one is the equity share, जहां पर आप डीमेट अकाउंट खोलते हो और you invest your money directly into market. Like किसी भी कंपनी का you have purchased the share, चाहे वो A लिमिटेड का हो, B का हो, C का हो, you can purchase 1 share, you can purchase the 100 share, you can purchase the 1 lakh share, you can invest 1 rupees, you can invest 1 lakh rupees, you can invest 1 CR. Okay, so that is the one thing, equity share. Again, mutual fund, it is the ELS, jahan par you have the some tax saving. Apart from that, you have the some mutual fund where there is no tax saving. Matlab, it is a made investment for the only money growth, income generation, but it is not going to give any tax saving impact on you. And sometimes क्या होता है कि suppose that I have fund of the 50 lakh rupees, I have fund of the 40 lakh rupees, I have fund of the 5 lakh rupees, but my period is very less, like 1 month, 2 months, 3 months. Suppose that today I have arranged 40 lakh rupees that is in my account, and I'm looking for home, or my negotiation is going on, but I know after 3 months I have to make payment. So what I do is met 40 lakh rupees ko, if I put into saving account, then it is approx 4 to 5%, yeah, 4.5% on average. If I go for the 3-month mutual fixed deposit, then it will be go approx 5 to 6%. But once I have invested into shares, then it might be possible within the 6 months it can go down, it can go up, but that is the uncertainty. But when we have made investment in debt fund, so there is a debt fund में ये on average 6 to 7 or 8% का कहीं ना कहीं से return आ जाता है. So we can make in debt fund or liquid fund. So within the शॉर्ट पीरियड लाइक 1 month 2 month जितने दिन की मुझे फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं वहां पर पुट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकता हूं. तो ये, लेकिन जो भी आप अर्न करोगे तो डेफिनेटली दैट इज द टैक्सेबल. तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी. लाइक देयर इज द वन टैक्सेबल दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड अदर इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ये आपको समझना होगा, या you must be aware कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और व्हाट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. आप एक मोटा मोटी ये आपको ध्यान रखना है. whenever you are making any investment into equity or mutual fund जिस पर STT लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, आप देखोगे कि when you have dealing with the demat account or you have the mutual fund transaction, जब उसका स्टेटमेंट आता है तो एक छोटा सा कॉलम होता है STT पेड. ओके, तो किसी भी सिक्योरिटी में व्हेन STT इज पेड, ओके, या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड, और वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, लाइक ए लिमिटेड का, बी लिमिटेड का, सी लिमिटेड का, किसी भी कंपनी का वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा, तो इफ यू हैव होल्ड मोर देन 12 मंथ देन इट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सपोज दैट आज से 2 साल पहले मैंने कोई शेयर और म्यूचुअल फंड परचेज किया है, एंड today I am selling after 12 months, then that asset will be considered as the long term asset, and whatever gain will arise on that asset is called long term capital gain. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज का सेबी में लिस्टेड है या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या एनी सिक्योरिटी, दे आर पेइंग STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो उसका जो होल्डिंग पीरियड है, इफ वी आर होल्डिंग लेस देन 12 मंथ, then it will be considered as the short term capital gain, और उसके ऊपर जो गेन एराइज होगा that will be the short term capital gain,
बट अगर 12 महीना से ज्यादा हो जाता है देन इट विल बी द कंसीडर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और उसका जो एराइज होगा दैट इज कंसीडर एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हो गया जिसके ऊपर एसटीटी लगता है। बट आपने एक कंपनी बना दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एंड मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज द शेयर होल्डर। आफ्टर 1 year, 2 years, 5 years, Mr. A is thinking, I have to move out from this business. I am not interested in this business. Yeah, there is no such as the scope, or I'm not interested anything. जब वो अपना शेयर किसी को भी सेल करता है, लाइक मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, मिस्टर डी को, किसी भी बंदे को सेल करता है, तो इस सिनेरियो में एज दिस शेयर इज नॉट लिस्टेड, दिस शेयर देयर इज नो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सो यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड होता है दैट इज द 24 मंथ इंस्टेड ऑफ द 12 मंथ। इट मीन्स कि जब तक आप 24 मंथ नहीं होल्ड करते हो देन इट इज द कॉल्ड short term, or once it exceed the 24 month then it will be considered as the long term capital asset। अब ये चीज तो मैंने बता दी कि जिसके ऊपर स्थिति जाता है दैट इज द 12 मंथ से कम होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा होल्ड करते हो देन इट इज द लॉन्ग टर्म। अगेन अनलिस्टेड में क्या होता है कि योर होल्डिंग इज मोर देन 24 देन इट इज द लॉन्ग टर्म, और लेस देन 24 इट इज द शॉर्ट टर्म। बट इन केस ऑफ द डेट वो 3 years होल्डिंग बोलता है। वंस यू हैव द 3 years होल्डिंग देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द लॉन्ग टर्म, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज द शॉर्ट टर्म। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये लगेगा, एक बार मैं बस फाइनली एक रिकैप कर देता कि एसटीटी पेड होता है 12 महीना से कम होगा देन शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म। देयर इज नो सिक्योरिटी, देयर इज नो लिस्टेड देन 24 मंथ का लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन डेट के केस में 36 मंथ का होता है। यही आपको 3 चीज ध्यान रखना है। नाउ योर क्वेश्चन विल बी कि ठीक है मनीष, वट एवर यू टोल्ड नो इशू, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इन आईटीआर। तो my question to you is whether we have to disclose that capital gain in our ITR or not. So I will suggest you have to show, otherwise you will get some problem. Like whenever you have made any investment into share, demat account, mutual fund or debt, आपका पैन और आधार is linked with that fund. वो पैन और आधार गवर्नमेंट इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि मिस्टर एक्स हैज मेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इनटू सिक्योरिटी ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऑन सच एंड सच डेट, और आज की डेट पर दिस मिस्टर एक्स इज सेलिंग और ही इज गेटिंग द सम इनकम। लाइक आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया था आपसे 2 years बैक, एंड टुडे यू आर सेलिंग इन 1,20,000 रुपए, तो वट एवर द डिफरेंस अमाउंट दैट इज द कैपिटल गेन। ओके, तो वो गवर्नमेंट इज द अवेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अवेयर ड्यू टू योर पैन इज द लिंक। सो देयर इज नो वे कि you will not disclose in your ITR. So it is my personal suggestion to you कि whatever income, whether it is the 1 rupees or whether it is the 1 lakh rupees, whether it is the 1 crore rupees from capital gain, आपको हर पैसा को you should be disclosed in ITR. If you have not disclosed, sometime you say कि 31st July is the last date, or Manish, I have asked with my mutual fund department, or I have asked with my RM और जो भी मेरा शेयर का था, so they are not giving the whole information, so I have not disclosed. So what I will do, so it is the suggestion to you कि if you can revise return, तो आप उस रिटर्न को रिवाइज कर दो, otherwise इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल गिव नोटिस टू यू कि आपने ये इनकम शो नहीं किया है, और इसके ऊपर वेदर इट इज द 15%, 20% या 30% टैक्स आ रहा है, यू हैव टू पे प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी बिकॉज यू हैव एस्केप योर इनकम। सो आपके पास वंस यू हैव एनी म्यूचुअल फंड इनकम, शेयर इनकम और डेट्स फंड से इनकम है, यू हैव टू डिस्क्लोज, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। नाउ क्वेश्चन arises कि ठीक है, व्हाट इज द टैक्स रेट? तो इफ इट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्हेन यू हैव पेड एसटीटी या लिस्टेड सिक्योरिटी है, और once it is the 10 it is the long term, so it is the 10%, or it is the short term, then it is the 15%. Okay, now I give the another example कि I have purchased share of A Limited on 5 years back in 5 lakh rupees. Today I have sold in 6 lakh rupees. Okay,
तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द 6 - 5 इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो मेरा कैपिटल गेन विल बी 1 लाख रुपीज। तो इस 1 लाख के ऊपर आई हैव टू पे एट द रेट ऑफ द 10%, मतलब मुझे 10,000 का टैक्स देना पड़ेगा, प्लस एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस जो भी अप्रॉक्स 4% होता है, उस 10 का 4% मुझे और देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि once it is the long term capital gain, तो you have to pay the 10%। जहां पर एसटीटी पेड है, वहीं पर इफ इट इज द शॉर्ट टर्म, लाइक आपने लेस देन 12 मंथ से पहले ही सोल्ड आउट कर दिया, लाइक 11 महीने 29 दिन में, 10 महीने में, 1 मंथ में, इन द यू हैव परचेज टुडे एंड यू हैव सोल्ड आउट। सपोज दैट आज मैंने एक शेयर परचेज किया ऑफ द 10 लाख रुपीज और नेक्स्ट डे आई एम गेटिंग द 2% हाइक या 3% हाइक, ओके, आई हैव सोल्ड इट। रीजन, एक दिन में 2% कौन दे रहा है? नोबडी इज गोइंग टू गिव। हो सकता है नेक्स्ट डे ये डाउन हो जाए, मैंने सोल्ड आउट कर दिया। तो जब मैं, इट इज द शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर 15% टैक्स लगता है। तो वट एवर आई हैव गेन, लाइक मैंने 10 लाख में परचेज किया था और आई एम सेलिंग इनटू 10 लाख 15,000, तो जो 15,000 है, इस 15,000 के ऊपर आई हैव टू पे 15% का टैक्सेशन मुझे देना पड़ेगा। ये था लिस्टेड और एसटीटी इज पेड। अगर किसी सिनेरियो में एसटीटी और ये नहीं पेड होता है, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आई हैव शेयर और आई हैव सोल्ड माय शेयर टू मिस्टर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर 24 मंथ से ज्यादा मैं होल्ड करता हूँ, देन इट विल बी कंसिडर एट द लॉन्ग टर्म। सो आई हैव टू पे 20% का टैक्स रेट पे करना है। इफ इट इज द शॉर्ट टर्म, देन इट विल बी द टैक्स एज पर माय स्लैब रेट। लाइक मेरा टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो माय शॉर्ट टर्म income will be taxed at the rate of the 30%. If my income is between 5 lakhs to 10 lakh rupees, then it is the 20%. Or my income is less than 5 lakh rupees, might be possible there is no taxation because 5 lakh तक कोई टैक्स नहीं आता है। Suppose that my salary income is the 4 lakh rupees और I have invested into any company like 1 लाख रुपए का मैंने शेयर परचेज किया था और टुडे आई हैव सोल्ड इन द 1,75,000, तो माय गेन इज द 75,000 और माय अदर इनकम इज द 4 लाख रुपीस। तो टोटल माय इनकम विल बी 4 लाख प्लस 75,000, दैट इज द 4,75,000। एंड सम रिबेट और द सम एग्जम्पशन इन इनकम टैक्स 5 लाख से कम है, तो देयर इज नो टैक्सेशन, तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज आपको सोचना है, समझना है। अगर यही इनकम, आई हैव द सैलरी इनकम ऑफ द 5 लाख रुपीज और आई हैव द कैपिटल गेन ऑन शॉर्ट टर्म इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 75,000, तो मुझे जो 75,000 के ऊपर जो टैक्सेशन लगेगा, दैट इज द 20% टैक्स लगेगा। यही मेरा इनकम 11 या 12 लाख हो जाता है, सैलरी इनकम या एनी अदर बिजनेस इनकम, और आई हैव द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसी 75,000 पर मुझे 30% टैक्स लगता है। तो आई होप यू गॉट द होल सिनेरियो। ये आपको यू विल से कि मनीष मेरा रिटर्न तो मिस्टर एक्स वाई जेड या कोई प्रोफेशनल भरता है, व्हाई आई वांट टू लिसन, बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू फाइल योर आईटीआर रिटर्न बाय योरसेल्फ, बट यू हैव टू अवेयर कि आपके उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, so that if your professional is giving the some misleading misinformation to you, then you can aware, you can check with my session or any information available on internet, you can check कि या मेरा जो प्रोफेशनल है, मेरा जो अकाउंटेंट है, जो मेरा रिटर्न फाइल कर रहा है, वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो दैट इज द रीजन यू हैव टू अवेयर। आप रिटर्न अपने से फाइल करो या किसी प्रोफेशनल से फाइल करवाओ या किसी फैमिली मेंबर से कराओ, डजंट मैटर, बट अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। And today we have last session we have discussed how to choose. I have not till date discussed the sector. I have not discussed the benefit of the switching. So next topic we will discuss about the benefit of the switching over. Like I have the some fund into the A mutual fund, तो मैं इसको B में जाता हूँ, suppose that I have find out कि नहीं A में I am not getting so much profit or I am getting the loss, तो I have to choose another mutual fund और मैं इसको switch over करता हूँ। Then we will understand in the next session कि switch over करने में what is the taxation, whether it is the tax, whether it is not tax, whether it is the exemption, मतलब what will be the scenario, that we will understand. And today again we have the discuss about the taxation. So if you have any question
in taxation of mutual fund you can ask. Reason is that मैं और 50 चीजें बता सकता हूँ या I can give, but whatever you have the issue or if you have not understand my session, like short term क्या होता है, long term क्या होता है, what is the taxation, why it is the not tax, why it is the tax, तो अगर आपका कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं होगा, then it is not a benefit for me कि or for you, because both of us is giving our time. So you can ask any question. If you don't have any question, then I will give the some more tips for this one. Any question from anyone like Savana ji, Alisha, Vasant ji, or Neelam ji? Anyone? जी गुड मॉर्निंग। Yeah, good morning, ma'am. वो आपने पिछली बार बोला था कि आप अच्छे 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जो जहाँ पे जो अच्छे Definitely, हैं। ma'am. तो मैंने today I have shared one PDF file in WhatsApp group जहाँ पर I have share की ELSS में if you want to invest तो वो कौन सा top 20 फंड है वो मैंने बताया था, और most probably by tomorrow I will share the top 10 म्यूचुअल फंड जो विदाउट टैक्स बेनिफिट वाला है, वो मैं कल सुबह तक एक बार रिसर्च करके बता दूंगा कि कौन सा अच्छा है, किसमें आप यू हैव टू। तो आई विल नॉट गिव द सजेशन लाइक कि आप किसमें करो, टॉप 10 का मैं नाम दे दूंगा, टॉप 10 का आई विल शेयर द व्हाट इज द ROI, व्हाट इज द उसका फंड कितना है, वो सारा चीज बता दूंगा। यू हैव टू टेक डिसीजन योरसेल्फ कि आपको किसमें जाना चाहिए। थैंक यू।